Hello guys and namaste. Welcome back to the Nifty City channel. Firstly, very sorry. Last week we couldn't do a video. कुछ important काम आ गया था. Busy. So couldn't record, but we're back again this week. So basically हम क्या करने वाले हैं? I'm going to keep it very simple. बहुत ही simple analysis करेंगे. 3-4 सिनारियो है हमारे पास निफ्टी में कि क्या हो सकता है. Keeping everything in mind, we're going to do analysis of Nifty, Bank Nifty, along with a few sectors. ठीक है, जो important लग रहे. So getting right into it, what we have right now is Nifty spot का chart. ठीक है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा Nifty spot का chart. Now first what I've done is I've opened the monthly time frame ताकि एक बड़ा overview हम ले सके. अभी अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, इफ यू आर फॉलोइंग अस ऑन टेलीग्राम, एक चीज आपको पता होगा, वी बेसिकली आर यूजिंग टू इंडिकेटर्स वेरी अग्रेसिवली, दैट इज ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, एंड आरएसआई. ठीक है, ये दो चीजें हम अग्रेसिवली यूज करते हैं. ऑन बेसिस ऑफ दिस वी ट्रेड ऑल्सो, वी डू एनालिसिस ऑल्सो, एक्सेट्रा. राइट नाउ एवरी ट्रेडर हैज हिज ओन स्टाइल. जो सेटअप से आप कंफर्टेबल है, प्लीज स्टिक टू दैट सेटअप. ओके, दिस इज माय ओनली एडवाइस टू यू गाइस. जो आई एम कंफर्टेबल विद दिस सेटअप, आई एग्जैक्टली नो हाउ टू यूज आरएसआई, आई नो हाउ टू यूज ईएमएस, तो मैं ये सेटअप के साथ रहता हूँ. राइट, सो नाउ व्हाट इज द मंथली टाइम फ्रेम टेलिंग अस. ठीक है, अब मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे, एज वी नो 21 ईएमए इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइड अ ट्रेंड. ओके, जब भी हम एक अप ट्रेंडिंग मार्केट में या एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में रहते हैं, इफ वी मार्क द 21 ईएमए, जैसे ही अगर अप ट्रेंडिंग मार्केट है, जैसे ही 21 ईएमए कटेगा, दैट इज आवर एग्जिट कॉल कि नाउ वी हैव टू एग्जिट ऑन अ क्लोजिंग बेसिस. ओके, सो द व्हाटएवर टाइम फ्रेम वी आर सीइंग, if the candle is closing below the 21 EMA on that, then we have to, that is an exit call for us. Okay, that's a pause in the trend. Now what has happened here, we are on the monthly chart. Now on the monthly chart, Nifty had gone below this red line is the 21 EMA. Nifty had gone below the 21 EMA and now it is back up. It is not closing below the 21 EMA. We have 1 week left. Okay, so important level in case in case Nifty does not want to close below the 21 EMA, that important level we have is मोटा मोटा पकड़ सकते हैं 15,600. okay, closing below 15,600 on the monthly time frame will be negative. Currently we are at 15,699 or 15,700, 100 points more. We are like 100 points ahead of that. But if we close below 15,600, then it will be negative for the market. Right, now moving on to the weekly time frame. Now on the weekly time frame, what we have is एक अप मूव दिया हमने. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जो हम क्रॉस नहीं कर पाए थे. वी केम डाउन अगेन, tried, this time we succeeded, we crossed, spent time here, went up, then obviously we were in consolidation or downtrending, and then we came and directly, now इसमें तकलीफ क्या है, 15,431 का जो लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल या जोन है, 15,400 से लेके 15,500 का जो जोन है हमारे पास, वी डिड नॉट हॉल्ट देयर. ठीक है, डेली कैंडल में अगर आप देखेंगे, वी हैड अ वेरी बैड फॉल on the expiry day, last to last expiry day, and we directly broke that level. There was no halt there. We did not respect that level. Now we have not seen any continuation of the downfall on the weekly time frame. Directly we have closed above again that level. So for me, this is a fake breakdown. Okay, so in my books, this is a fake breakdown. So usually when a fake breakdown occurs, immediately we will not go below these levels again. So 15,400 should act as a good support right now. Okay, having said that, 15,400 has been hammered a lot. The support will become weak. कोई भी support को हम बार बार hit करता है तो वो support weak हो जाता है. Now coming to the daily time frame. Okay, now this is the time frame where we are going to get exactly what we have to do.
राइट? एग्जैक्टली कमिंग वीक का एक्सपायरी तक या उसके आगे भी हमारा क्या फ्रेम ऑफ माइंड होना चाहिए, हमको कैसे ट्रेड करना चाहिए, क्या हमारे पॉसिबल सिनारियोज है। सो निफ्टी स्पॉट का क्लोजिंग हम 15,700 मान लेते हैं, 15,700 पे वी हैव क्लोज्ड। एज पर SGX निफ्टी इफ यू सी करंटली वी आर एट 15,859। ओके, सो एक गैप अप हम मंडे को देखने वाले हैं इन ऑल प्रोबेबिलिटी, अनलेस समथिंग ह्यूज हैपेंस ऑन मंडे मॉर्निंग एंड SGX निफ्टी स्टार्ट्स फॉलिंग, वरना एक गैप अप देखने वाले हैं। तो लेट्स डिस्कस ऑल द सिनारियोस। ओके, सो दिस, if you can see here, we have a big gap that is pending. Okay, this is a gap. अब as you know, market को gaps पसंद नहीं है, market will go to fill this gap. But when will it go? What is the scenario? Let's discuss. So we have this kind of a top here. Okay, 15,886. This is a crucial level, guys. 15,886 crucial level है. This is the level which will act as a big resistance. Why am I saying that? If you see, we have the 21 EMA here. जैसे अप ट्रेंडिंग में अगर 21 EMA डाउनसाइड पे कटता है, the trend changes. Similarly, if we are in a downside market and the 21 EMA upside पे कटता है, then the trend changes. So we have 21 EMA का confluence along with this huge resistance here. Okay, 15,886 का level है. Now, once we cross 15,886, we will go to fill the gap, right? So, मैं gap का level mark कर देता हूँ. Gap का level is 16,172. Okay, this is the level. Now, what we'll add to this? We will add a Fibonacci retracement. Okay, now we know this is the last impulse that we had. Now, इसका अगर हम एक retracement मान रहे हैं, तो कहाँ तक retracement आएगा? Let's see. Now you'll be surprised, guys, कि अगर मैं इधर एक फिबोनाची मारूं, our golden ratio 61.8% का जो रिट्रेसमेंट है, that is also same level, almost same, 9 पॉइंट का फर्क है. That is why this level of gap filling is very important. Okay, this will act as a supreme resistance. If we cross 16,172, okay, और 182 आप पकड़ लीजिए सेफ्टी के लिए, 16,182 अगर हमने क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, then I will be convinced कि ये जो हमने इधर बॉटम बनाया था, that was our, at least for the short to mid term, this is going to be our bottom. Correct है? Now in all scenarios, where can, if the downside is going to continue, where can we reverse from? Okay, so now there are 2-3 things in this. या तो हम जो मंडे, कमिंग मंडे का सेशन है, we open gap up, go to 15,886 till here, and then we reverse. Okay, now if we reverse from here, no issues. First support is going to be 15,400 again, which I have said is going to be weak. Major support is going to be the low जो हमने इधर लगाया था, 15,180 to 200. अगर ये लो कट गया, 15,180 200 के नीचे क्लोजिंग आ गई, then directly we have targets which our Fibonacci itself will give us. Targets are going to be 14,755, 14,527 and 14,200. Okay, now 14,200 is also important. Why? Because if you see here, we have this swing. Okay, so this will be the final bottom जो मार्केट में लगेगा, कंडीशन बीइंग 15,180 से लेके 200 का जो जोन है, जो हमारा रीसेंट लो लगा है, उसके नीचे मार्केट क्लोज होनी चाहिए. ठीक है, 15,200 के नीचे अगर क्लोज हुई, वी आर डायरेक्टली ओपनिंग अ विंडो ऑफ 1,000 पॉइंट्स, बट वी विल हैव टू प्ले इट एट स्टेजेस. फर्स्ट टारगेट 14,755, सेकंड टारगेट 14,527, third target 14,200. Right now, in case we cross the 21 EMA, that is 15,886 level, directly अब window खोल देंगे for how many points? Of further around 350-400 points का window खोल देंगे till 16,172. Okay, this will be a very good trade for us. ये gap भी है, ठीक है, ये एक gap है, इधर कोई resistance भी नहीं है हमारे पास.
61.8% का लेवल भी आता है। अगर आपको एक स्पीड ब्रेकर मार्क करना है तो आप 50% रिट्रेसमेंट लेवल ले सकते हैं। 15,992 का एक लेवल है विच कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। मोटा मोटी आप 16,000 पकड़ लीजिए, ठीक है। अगर मैं ओआई डेटा को भी कंपेयर करूं, उसमें भी ऐड करूं, सो वी हैव द ओआई डेटा हियर, यू कैन सी 16,000 इज द रेजिस्टेंस। So this will act as a speed breaker for us. Although eventual target will be 16,172 itself, but this will be a speed breaker for us. Support pay we have 15,500 as per OI data. But OI data को हम इतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे क्योंकि फ्राइडे एक ही दिन हुआ है, इतना OI डेटा पे एक्टिविटी नहीं हुआ है। मंडे ट्यूसडे को वी विल गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट द OI डेटा इज गोइंग टू बी लाइक। सो फ्रॉम द ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव व्हाट वी हैव टू डू, शांति से वेट करना है। ऐसा नहीं मंडे को 15,859 पे ओपन हुए और आपने बाय कर लिया। दिमाग में रखना 15,886 इज अ रेजिस्टेंस। सो प्लीज डोंट गो एंड बाय फॉर 36 पॉइंट्स, 36 37 पॉइंट्स के लिए ट्रेड मत लीजिए, गलत फंस जाएंगे। सो लेट्स वेट। इफ वी क्रॉस दिस लेवल, वी आर सस्टेनिंग अबव दिस लेवल, then definitely the target is 16,172. Once we cross 16,172, then we will analyze further. Okay, then we definitely have a higher level than that. We have, but अभी discuss करके कोई फायदा नहीं है because it's काफी दूर है वो levels. On the downside, if we reverse from 15,882 or from 16,172, मैंने आपको नीचे के levels बता दिए हैं, supports बता दिए। Now moving on to Bank Nifty. बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है? ओके, तो बैंक निफ्टी में मैं आपको एक सिमिलर सेटअप शेयर कर रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग मच इनटू मच डिटेल। सिमिलर सेटअप क्या है? बैंक निफ्टी ऑल्सो वी हैव द गैप। नाउ हाउ इज निफ्टी डिफरेंट फ्रॉम बैंक निफ्टी? निफ्टी में वी आर गोइंग टू बी अप्रोचिंग दिस रेजिस्टेंस, ओके, दैट इज 36,627 33,728 का रेजिस्टेंस हम अप्रोच करने वाले हैं। इन निफ्टी वी आर फार अवे, हियर वी आर एट द रेजिस्टेंस। तो मंडे को जब गैप अप खुलेगा, वी विल डायरेक्टली बी अबव दिस लेवल, ओके। सो डेफिनेटली बैंक निफ्टी इज लुकिंग स्ट्रॉन्गर। द लेवल टू वॉच आउट फॉर इज 34,346। नाउ ऑब्वियसली अगर हम निफ्टी में गैप फिल करने वाले हैं, बैंक निफ्टी कैन गो हायर देन दैट। So another important level to mark is 34,819. Okay, same Fibonacci अगर मैं impulse में इधर मारता हूं, so मुझे 61.8% का लेवल आ रहा है 34,557. Okay, तो 34,500 आप एक important level मान के चलिए in बैंक निफ्टी। Okay, so 16,172 in Nifty and 34,500 in Bank Nifty. These are the important levels for the coming week. On the downside, definitely we have 31,000, 30,772, 30,023. Okay, this is going to be the final level. There's a good support zone also drawn here. So, agar downside below the low, okay, below the low we have another swing support here. ये हमारा लो लगा था, हम सपोर्ट तक नहीं गए थे। ओके, निफ्टी में हमने नया लो लगा दिया था, बैंक निफ्टी में हम लो तक नहीं गए थे। सो अगर 32,150 के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज देती है तो वी कैन ओपन अ टारगेट ऑफ 30,000। ओके, अराउंड अबाउट 30,000 का आप टारगेट पकड़ के चलिए इफ देयर इज अ क्लोजिंग बिलो 32,150। राइट, नाउ दिस इज बैंक निफ्टी। आई होप the trading plan is clear for you guys. Especially trading plan is very simple in Nifty. कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक लेवल है, इसके क्लोजिंग के ऊपर आपको डायरेक्ट 100 पॉइंट का टारगेट खुल जाता है, उसके ऊपर डायरेक्ट आपको 172 पॉइंट्स का टारगेट ओपन हो रहा है। इन केस देयर इज अ रिवर्सल, तो डायरेक्टली रिवर्सल के लिए सपोर्ट्स मैंने आपको बता दिए 15,400, उसके नीचे वी हैव द लो 15,180 to 200। तो आराम से हर मूव में 100, 150, 200 पॉइंट्स अगर आप कैप्चर करते हैं, so you will make very good money in the coming week. As simple as that. ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। Go with the trend.
डोंट ट्राई टू फाइट द ट्रेंड कि ट्रेंड अपसाइड का है, मैं रिवर्सल ढूंढ लूं, कहीं से टॉप ढूंढ लूं. डोंट गो फॉर दैट. जो ट्रेंड के साथ है, फ्लो के साथ आप जाइए एंड मेक मनी. ओके, नाउ लुकिंग एट द इंडेक्स. नाउ वी हैव फर्स्टली वीकली में लगा देता हूँ टाइम फ्रेम. दिस इज द मिड कैप इंडेक्स. मिड कैप इंडेक्स में हम देखेंगे दिस वाज द रेजिस्टेंस, क्रॉस हुआ रेजिस्टेंस, इधर ही सपोर्ट लिया, वापस इधर सपोर्ट लिया, वापस मार्केट ने ये लेवल पे सपोर्ट लिया है. So this is a very important level in mid cap. Mid cap has taken support at this particular level again and again. 7118.90 is the level. We are currently trading above that. The moment we go below this level will be when the market is going to fall drastically. Okay, so अगर market का 15,180 के नीचे market slip हो रही है, you will see mid cap index below 7118.90. They will go hand in hand. सेम चीज मैं अगर आपको स्मॉल कैप भी दिखाऊं, स्मॉल कैप ने भी सपोर्ट लिया है. स्मॉल कैप के पास एडिशनल सपोर्ट ये स्विंग का तो है ही, साथ साथ में 200 डे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट मिला है स्मॉल कैप इंडेक्स को. सो स्मॉल कैप हैज आल्सो टेकन सपोर्ट. ओके, काफी पिटाई हुई है मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स की. एज ऑफ नाउ वी डोंट नो वेदर दिस इज जस्ट अ रिट्रेसमेंट, अ पुल बैक, और is this the finish, is this the bottom? We don't know that. Okay, so this can be just a temporary pullback, a retracement, or it can be a bottom. We will see basis of Fibonacci retracement. As soon as the golden ratio of 61.8% के ऊपर pullback चले जाता है, then we will conclude that हमारा एक bottom form हो चुका है. Till that time we cannot conclude. Okay, auto sector very important. हम discuss करते आए हैं auto sector. We were little bearish in auto sector, but our view changed the moment this pre-candle formation happened, and now auto sector has given a breakout on the weekly time frame. Okay, अभी देखना auto sector में ये है कि ये breakout का continuation upside पे ऐसा एक candle मिलता है कि ये fail हो जाता है move. Okay, this is going to determine. So for the coming week, you can definitely look at auto sector stocks. Second thing that I'm going to give you guys is private banks. Okay, अब private banks में हमने देखा है ये एक important support था, बार बार हमने इधर support लिया है, वापस हमने इधर private banks में support लिया है with the confluence of the 200-day moving average. Very good level. Private banks have taken support. Definitely you can see some kind of retracement pullbacks in private banks. We've already seen that. HDFC Bank, ICICI Bank have already started moving well. HDFC Bank तो काफी पिटने के बाद, काफी महीनों से पिटने के बाद HDFC Bank has started moving up again. So guys, in case you like the video, please hit the like button. Also, another update, we had given 4 stocks on the 21st of June in our Telegram group. So we had given, for example, we had given Biocon on the 21st. Okay, so this is Biocon, 21st June, opening was around 315, high banaya 340. We had given SRF, 21st June, 21st June, yeah. 21st June opening was around 2,160. Current price is 2,277.95. Dixon we had given, Dixon Technologies, 21st को opening was 3,359 के आसपास, नहीं, opening was 3,393 के आसपास. Current price is 3,527. Only L&T has been sideways, मैं बोलूंगा. It's not at all in loss, but it's in sideways. Okay, so we had given 4 stocks: L&T, Biocon, SRF, Dixon. 3 stocks have given you very good returns. 1 stock is sideways. So if you guys want more such stock updates in the Telegram group, more such videos, we are also thinking to come up with analysis videos like these on a day-to-day basis for every day. So if you want such things, please like, share and comment in the video so that I know what you guys want. बाकी all the best for the coming week. Monthly expiry है, बहुत volatility हो सकती है market में, but our plan has to be set, right? All the best. Take care, guys.